वेलकम बैक क्लास 8 स्टूडेंट्स। हम कर चुके हैं अपना फर्स्ट चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैं हूं डॉक्टर दीपक और आज हम रिवाइज करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्विक रिकैप एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपकी बुक में चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं। क्विक रिकैप में वी हैव few questions. The first question is who discovered the cell and how? So this is one important point of the discovery of the cell. सेल की अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं तो डिस्कवरी ऑफ द सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो रॉबर्ट हुक वाज अ साइंटिस्ट इन 1665 who discovered the cell. He discovered the cell in a thin slice of cork. Thin slice of cork में उसने सेल को डिस्कवर किया। With the help of a microscope he saw the cell और जो उसकी सेल की अपीयरेंस थी that was honeycomb appearance of. He observed a structure similar to the honeycomb and named this structure as cell. तो सेल का नेम भी किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। सेल को डिस्कवर भी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स रीड आउट फ्रॉम द नेम। यूनिसेलुलर मतलब द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। मल्टीसेलुलर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ओके, सो दीज आर मेड अप ऑफ वन सेल and they contain many cells. Since unicellular organism have just one cell, इनके पास सिर्फ एक ही सेल है तो वो ही सेल सारे functions करेगा. So single cell perform the entire functions. और जब हमारे पास many cells आ जाएंगे तो division of labor हो जाएगा। कुछ cells कोई function perform कर रहे हैं, कुछ cells कोई और function perform कर रहे हैं. So various functions are performed by many cells. Number 3 are the examples given for both of them. Unicellular organism के example है amoeba and bacteria and multicellular organism के example है all the plants and animals. Okay. Moving on to the third question. Give a note on binary fission. Now binary fission is a type of prokaryotic cell division. Prokaryotic cell कैसे divide करेंगे? उसका एक type जो होता है binary fission होता है, जो हमने diagram के साथ अपनी book में पढ़ा था कि पहले जो है वो न्यूक्लियस दो में डिवाइड करेगा, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा एंड दे विल बी टू डॉटर सेल्स. सो बाइनरी फिशन इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन seen in prokaryotes and the fully grown parent cell divides into two daughter cells. It involves division of nucleus. पहले division of nucleus है followed by division of cytoplasm. Ultimately we have two daughter cells. Fine. So this is binary fission, which is a kind of cell division. Moving on to the fourth question, which asks about mitosis and its significance. So define mitosis and its significance. Mitosis is a kind of cell division which occurs in the somatic cells. मैं brief कर रही हूँ बेटा mitosis के क्या क्या points important हैं कि somatic cells में होती है और जो parent है और daughter cells हैं उनमें chromosome number same रहता है और ये हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. डॉटर सेल्स possess the same number of chromosome as the parent cell. Mitosis occurs in the part of normal cell growth and to replace the worn out cells. This is where the mitosis is required in a body. Okay. Number 5, give a note on diploid cell and haploid cell with an example. What is a diploid cell and what is a haploid cell? A cell that contains two sets of chromosomes, that is two copies of the same chromosome, one from each parent. एक father से आया है, एक mother से आया, so we have two chromosome, okay, for the same number. Parent is called diploid cell and haploid cell contains only one set of chromosomes. So haploid have only one set of chromosome. For example, in humans अगर हम बात करते हैं, so diploid cells will have 46 chromosomes, which is 23 pairs. 46 chromosome बोलेंगे हम इनको, but we generally talk in pairs, तो मैं बोलूंगी कि 23 pairs होते हैं. और अगर मैं haploid cell की बात करूं तो which are the gametes जिनके अंदर होंगे 23 chromosomes. Okay, so human gamete is haploid and have 23 chromosomes. These are the questions of quick recap. Now moving on to the points to remember section which will revise a whole topic. Okay.
The first point is a cell is the smallest individual unit. Cell is the smallest structural and functional unit of any living being, and it is capable of performing all essential life processes by itself. Number 2, it talks about the cell theory. So cell theory was given by Matthias Jakob Schilder and Theodor Schwann, which was further modified by Rudolf Virchow. So this is cell theory. Now Rudolf Virchow stated that new cells arise from pre-existing cells. He told omnis cellula e cellula, that means all cells arise from the pre-existing cells. It was a kind of addition into the cell theory. Okay. The fourth point, prokaryotic cells are primitive type. Prokaryotic cells जो होते हैं, जो primitive type के होते हैं, जिनके अंदर true nucleus नहीं होता है, and there are no membrane bound organelles. Okay. Eukaryotic cells. Now we are talking about the eukaryotic cells. They are a little complex. They have a true nucleus. They have membrane bound organelles, and the genetic material is surrounded by nuclear envelope. So they have a nucleus. उसके राउंड एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. इसके एग्जांपल होते हैं हमारे ऑल द प्लांट सेल्स एंड ऑल द एनिमल सेल्स. The next point is the process in which a cell divides into two daughter cells is called cell division. The next point talks about the definition of cell division. कि what is cell division? The process by which a cell divides into two. मतलब एक सेल को दो में डिवाइड होना है, so it has to undergo cell division. Dividing the cell into two is called as cell division. So moving on to the next point, which is about cell division. Cell division, why cell division is required? It is required for growth, reproduction and repair. The next 2 points are about mitosis and meiosis. The next point is about mitosis. So mitosis is a division जिसमें parent cell और daughter cells identical होते हैं genetically and otherwise also. And meiosis is that type of cell division which occurs during sexual reproduction and forms gametes. So it occurs during sexual reproduction and gamete formation occurs in this. So these are all the points to remember we have covered. We have covered the whole topic in these few points. Thank you for watching this video. We are done with this chapter. In next video we are going to start with a new chapter. Thank you so much.